Hello, dear students. Today's topic is The Seasons of the Plains. The Season of the Plains. It's a poem written by Agha Shahid Ali. Agha Shahid Ali was a famous and well known poet who belonged to Kashmir but had settled in the US and died young because of cancer. Agha Shahid Ali in this poem talks about his homeland Kashmir. He says that the year has 4 clear seasons in Kashmir, that all you know: the season of summer, the season of autumn, the season of winter, the season of spring. The poet's mother talks about her childhood. She had spent her childhood in Lucknow. She also remembered the monsoon there, when the flute of Lord Krishna was heard on the banks of the Jamuna. Besides this, she recalled how she played old records of the Banaras Thumri singers. Sudeshwari and Rasulan were the well-known singers. The voices of these Thumri singers longed during the monsoon rains for the invisible blue god Lord Krishna. Every sweet song or lyric expresses the same theme. It's that separation between the lovers becomes unbearable when the rains in the monsoon come. Children feel very excited during the monsoon rains. They come out of their homes and run into narrow lanes. They absorb the rain water throughout the summer. Lovers are also excited. Their love is forbidden like the love of Heer and Ranja, so they exchange messages of love. They keep on waiting for messages during the night. As they keep awake, jasmine, incense sticks keep on burning and dying. As a result of burning, the soft necks of ash becomes longer and longer. The poet imagines that each neck of ash leans on the air full of humidity. The poet's mother sang the legendary Heer's song of sorrow, lamentation. The poet does not know whether his mother also used to wait for a message from her lover during the monsoon night. She has never told him about that, but she used to say that the monsoons never cross the mountains to enter into the Kashmir. प्यारे बच्चों, शायर इस खूबसूरत नज़म में अपने वतन कश्मीर के बारे में कहते हैं कि कश्मीर में एक साल के 4 मौसम होते हैं और इनकी माँ, जिनका बचपन लखनऊ में गुजरा था, उनके बारे में कहते हैं कि वो अपने बचपन के दिनों की बातें कहती थी. वो बातें करती थी जब मॉनसून से लाई हुई बारिश के सबब बरसात होती थी. बरसात के दिनों में माहौल बंसरी की धुनों से गूंजता था. ये धुनें जमुना के घाट पर भी सुनी जाती थी. शायर की माँ बनारस की थुमरी सिंगर्स के पुराने रिकॉर्ड बजाती थी. इन सिंगर्स के नाम में सुदेश्वरी और रसुलन थे और इन सिंगर्स की आवाज़ भगवान कृष्ण, जो कि नीले रंग के हैं, से मिलने की ज़बरदस्त ख्वाहिश से बड़ी ख़ास तड़प लिए होते थे. हर गीत या नज़म यही कहती थी कि जब बरसात के मौसम में बारिश आती है तो आशिक और माशूक को आपसी जुदाई नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है. आशिक और माशूक एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं. बच्चे भी इस मौसम में मज़ा लेते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, सड़कों पे घूमते नाचते हैं. आशिक और माशूक भी अपनी ही स्टाइल से हरकत में आ जाते हैं. इसके दौरान मोहब्बत के पैगाम एक दूसरे के भेजे जाते हैं. ये पैगामात
ہمیں ہیر اور رانجھا کی محبت یاد دلاتے ہیں۔ وہ اپنی محبت کو جاری تو رکھتے تھے مگر راز دارانہ طریقے سے، چھپے چھپے۔ سماجی، مذہبی اور ذات پات پر مبنی بندشیں انہیں آزادی مانگتے تھے۔ ایسے عاشقوں اور معشوقوں کو ساری رات اپنے پیاروں کے جواب کا انتظار رہتا تھا، اور شاعر کی ماں سدیشوری اور رسولن کے گیت گاتی تھی اور کبھی ان کے بارے میں سنجیدگی سے بات نہیں کرتی تھی۔ جب وہ اپنی ماں سے پوچھتا تو اس کو وہ نہیں بتاتی کہ وہ کسے اپنی عاشق مانتی ہے۔ اس کے بجائے وہ یہ کہا کرتی تھی کہ مونسون کی بارشیں جو ہیں پہاڑوں کو پار کر کے کشمیر میں داخل نہیں ہو جاتی۔